let's figure out some UX blogs that you must check out. And my first recommendation is going to be a blog which is launched by Editor X. So you go on editorx.com/shaping design, and of course they have a lot of things going on. Editor X is a fabulous company, but they've been launching some very cool articles around web design, UX, UI processes, interviews. So I would recommend you to check out this blog. And once you go to this website, they have this thing called UX UI on the very top. So when you click on that, all the articles that would be filtered are according to what they feel is very important for the subject of UX. So try to go through these articles and try to make notes in your Notion. Apart from that, instead of just focusing on the theory aspects of it, I would recommend you to check out their interview section. So they have interviewed some very good senior product designers from all over the world. Very high quality stuff, very high quality content available for free. And in their processes section, they actually show you design processes of very successful designers. So what you can do is you can take references and figure out if you can pick something from their process, right? My second recommendation is uilearn.com. Now uilearn has a couple of things. They have a free course, they have an ebook, but what I would recommend you folks to check out is their newsletter. So you can put in your name and email and you can subscribe to this newsletter, and weekly they would send you like really practical, in-depth advice. So on UI Learn, there's a section called blog. So of course you can subscribe to the newsletter where you get weekly updates. But unke blog pe jaake, what you can do is you can start reading topics that are suitable for your phase. So agar aapko career and growth ke bare mein padhna hai, they have a tag for that. If you want to focus on your UI design, they have a tag for that. If you are a product manager, or a person who wants to become good at product designing, specifically like product management, you can always check out their product tag. So a very comprehensive and well organized repository of blogs, and of course sab kuch free mein available hai, so you have nothing to lose. Again, my third recommendation is going to be a blog by Lottie Files. So aap sabne Lottie Files use kari hogi for animations, in your apps and everything. But apart from the products that they've been making, they have a very good blog. And their blog actually gives you like an in-depth look of how you can incorporate Lottie files in your websites and applications. So जैसे अगर आप उनके blog पे जाओगे तो जो उनका पहला article है, that is around adding HTML files के अंदर your Lottie animations. But there's a lot more that you can learn, right? And to be honest, when I go to these websites, I also check how they've designed their thumbnails, वो कैसे लिखते हैं, उनका structure क्या है, 5 मिनट में कैसे वो value deliver करते हैं. तो जब आप इन blogs को पढ़ रहे हो, don't just focus on design, focus on the vocabulary that they're using, focus on the phrases that they're using. Like try to figure out how they write, क्योंकि आगे जाके आपको भी अपने blogs लिखने होंगे, आपको जाके आगे जाके अपनी case studies लिखनी होगी. तो इन blogs को पढ़ के, इन case studies को पढ़ के आपको बहुत reference मिल जाती है as to how you can execute things properly. अब जैसे अगर आप लॉटी फाइल्स के किसी भी ब्लॉग को खोलोगे, तो अभी जैसे मैंने इंस्पिरेशन टैग करा है, तो दे आल्सो हैव टैग्स फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स. सो व्हेन यू गो ऑन देयर ब्लॉग सेक्शन एंड इफ यू क्लिक ऑन इंस्पिरेशन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल रिसोर्सेज टू डिजाइन रियली गुड यूआई. So there's a lot that you can learn from just this one resource. So those are my 3 blog recommendations. Now let's jump to 3 websites that you just cannot miss. I mean, मैंने जब इन वेबसाइट्स को देखा था, आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे सिंपली बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, द वे दे वर सो वेल मेड, राइट? एंड द फर्स्ट वन इज एक्चुअली फॉर अ मूवी. तो आपने हाउस ऑफ गुची का नाम तो सुना ही होगा. इट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल मूवी. इट हैड लेडी गागा इन इट. तो हाउस ऑफ गुची को प्रमोट करने के लिए दे मेड अ वेबसाइट कॉल्ड वेलकम टू द हाउस ऑफ gucci.com. and I would recommend you to check this out on your phone, your tablets and your website. इसकी जो सबसे एक्साइटिंग इंटरैक्शन है वो बीच में की है. तो जैसे जैसे आप वर्टिकली स्क्रॉल करते हो इस वेबसाइट को, ये की रोटेट करती है ओवर द कंटेंट. Extremely dynamic, extremely pleasing for the eyes. It is a wonderful interaction. I would recommend you folks to 100% check this out. Next, we have a website that was launched by Adidas. So Adidas का एक collection आया था Oswald करके, and I think they launched this collection in like a virtual metaverse sort of a thing as well. It was very cool. तो इस वेबसाइट पे जाके यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट एवटार्स. तो आप क्या करते हो, आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर करते हो एंड दे हैव अ क्वेश्चनर, एंड द क्वेश्चनर इज वेरी वेल डिजाइन. ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म आ रहा है. इट इज वेरी इंटरैक्टिव, जहाँ पे यू यूज योर हवर, योर माउस का कर्सर टू सॉर्ट ऑफ मूव अराउंड एंड गिव योर रिस्पॉन्सेज. So it would ask you questions about your personality, how you are as a person, what you prefer, and the way it takes
your input and the way it gives you feedback is phenomenal. The choice of their colors, the choice of the animations, the sound, everything is absolutely on point. And जैसे जैसे आप अपना questionnaire complete करते हो, it sort of has this loading bar जहाँ पे it says generating avatar. तो जैसे ही आपका avatar generate हो जाता है, you get like this virtual version of yourself and a pair of shoes, right? So your virtual avatar is wearing this pair of shoes, and then you can sort of trigger your avatar to do certain moves. तो वहाँ पे ये अलग अलग options आती है, जैसे इसमें अभी 3 options आ रही है. So you can actually make that person sort of make moves, and it looks very cool. Like पीछे music चल रहा होता है, you can take a screenshot and you can then post it on your Instagram. So they are leveraging interaction, they are leveraging personalization, and they're leveraging social proof, and they're giving you that sensation of owning a pair of Adidas virtually, right? So very, very, very cool website. 100% I would recommend you to check out all of these websites on your phone, tablet, and desktop, क्योंकि आपको तीनों में देखना चाहिए. Every time you check a marketing website that has a lot of interaction, see how gracefully it transitions from a desktop to a mobile to a tablet. It is a very, very tricky subject. That is why I always recommend folks to do this. Third website is actually launched by YouTube. So it's a thing called youtube.tarot.appspot.com. Now I'm still not sure if this is officially by YouTube, but it certainly looked supremely official. I think it is officially by YouTube. And it's basically like a virtual tarot. So आप इस website के अंदर enter करते हो, and as soon as you enter, you have like this deck of cards and beautiful interaction, मतलब gorgeous level interactions. आप mouse को hover करते हो, you shuffle the deck, and you sort of select your cards, and then they have 3 YouTube channels. So जैसे मैंने एक specific YouTube channel को select करा, so this was the lady, I think she owns the YouTube channel, and then she was reading the cards that I selected and sort of giving me feedback, right? So it was a very, very interactive way to sort of have a virtual tarot, and beautiful sound, beautiful interactions. इनकी loading states भी बहुत बहुत well executed है. So I would strongly recommend you folks to check this out. And it's more about, rather than seeing how can I implement this, it's also about taking inspiration, right? Because all of these websites, they are selling a product, but they are incorporating a lot of visual design, a lot of sound, a lot of interaction. चाहे Adidas हो गया, चाहे YouTube हो गया, चाहे House of Gucci हो गया, इनका जो original product है, it was completely something else, right? House of Gucci was a film. Adidas is into shoes. Yeah, YouTube is into content, but now they have leveraged technology and they've built an experience which is too unique. And once you go through this experience, you can never go back. तो ये आपके माइंड में आ जाता है. ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस लाइफ को शायद पहली बार ही कर रहे होंगे, एंड अगर आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस डिजाइन करने में इंटरेस्ट है, अगर आपको भी डिजाइन में इंटरेस्ट है, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है 15 एपिसोड्स का, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इस फ्री कोर्स को यूज कर सकते हो. एंड अगर आप क्यूरियस हो कि मेरी लाइव स्ट्रीम इतनी कूल क्यों लग रही है, देन ऑल ऑफ इट हैज बीन स्ट्रीम्ड यूजिंग Zuddl Studio, which is a platform that we all have designed together at Zuddl. And अभी अगर आप Zuddl Studio को यूज करते हो, you will be able to get 3 months for free. तो आपको लाइव जाने की भी जरूरत नहीं. अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, पिच डेक्स है, कुछ भी है, अगर आप कहीं टीच भी कर रहे हो, you can actually record your videos in a very cool way, download the MP4 and edit it yourself, right? So abhi agar aap jate ho, you for a very limited time you will get 3 months free, which is worth $750. So yes, now that we have covered our resources, 3 blogs and 3 very cool websites, it's time for our live Q&A. I am reading the chat section. If you are if you have any questions, you can always let me know. So yes, let's have questions, folks. It's time for questions. We have 53 people, so you should probably make the most of this opportunity. Oh, no questions? Interesting. अभी तक कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, but if you folks don't have any other questions, that we can close the live. I'm completely okay with it. So one person has just posted one word: income. Income. I love it. I think this is the top question. Income. पैसे.
I'm in BTech ECE fourth year and I'm very confused about my career towards coding versus UI UX. Please help me to choose the right path. How can I understand my interest and how much time will it take? Rahul Kumar, there are two things here. पहला है कि आप naturally किस चीज में अच्छे हो, दूसरा कि आपको किस चीज में interest है. राइट, पैसे दोनों में आप सेम कमा सकते हो. तो अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो साइड बाय साइड, यू कैन वेरी वेरी इजीली स्टार्ट लर्निंग यूएक्स एंड स्टार्ट पिकिंग फ्रीलांस क्लाइंट्स. अभी मैंने पीछे रेफरेंस डाला ही है, राइट. तो मैंने जो भी अपना कोर्स बनाया, यू कैन 100% use those 15 episodes, start learning about UX, and you will very easily get your first job. It takes around 6 to 7 months very easily. 6 to 7 months तब जब आप हर रोज 1.5 घंटा लगाओ. तो 1.5 घंटा हर रोज लगाओ के पूरा महीने लगाओ के तो 6-7 महीने में जाके यू विल बी एबल टू गेट अ गुड जॉब इन अ गुड कंपनी. How to get started with building a personal brand? Oh, Tejas, this is a pretty big topic. I think we should cover this later. Can you explain Zuddl a bit? Oh, hi Shiv. Hi, I'm so glad to see you here. So basically, Zuddl Studio, what you see right now, Zuddl Studio, is just to make your live streams look really good. क्योंकि जो normal live streams होती है, they look pretty boring. तो usually live streams में ये नहीं होगा, मेरा overlay नहीं होगा. In fact, using Zuddl Studio, I can also add text, right? And text के साथ साथ I can, change my brand colors in real time. तो मेरा brand color is sort of red, तो मैंने red color choose करा and now it is updated in real time, right? So it just makes things look really really cool, and it all happens in real time. Would you recommend any site for portfolio? Ayushi, I would 100% recommend you to use Notion. In fact, मैंने अपने ही channel पे portfolios के ऊपर पूरा एक detailed video बनाया. You should 100% check that out. Is GFX designer equals to UX designer? I don't think so. What skills are most required for product designers? Ritvik, it's all about your ability to solve problems, your ability to research, make systems, your communication, your visual design, a lot of things put together. How do I choose a topic for case study? Design Pilot has been putting out a lot of good topics. You can always check out Medium for really good case studies. How do you know if you're ready to apply for a UX design job? If you have 3 good case studies, if you are confident about your case studies, you can 100% start applying. You just need 3 good case studies to get started. How can I strong my visual design? It's very easy, right? Like, you just start doing your 100-day UI challenge. आप हर रोज एक application उठा सकते हो, and you can sort of trace it, like start tracing it, because it's very important to improve the way यू लुक एट डिजाइन, राइट. लाइक विजुअल डिजाइन में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, इंप्रूव करना होता है. तो दैट हैपेंस जब आपकी गट इंप्रूव होती है. तो गट से क्या होगा, जैसे जैसे आप ट्रेस करते रहोगे डिजाइन को, आपकी गट इंप्रूव होती जाएगी. जैसे जैसे आपकी गट इंप्रूव होती जाएगी, यू विल बिकम बेटर एट विजुअल डिजाइन. सो या, आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, बट द बेस्ट इज टू हैव योर 100-day UI challenge. Hey Ansh, the experience with your UX design series was very good. When is your in-depth course coming? Soon, very soon, Karthik. I am actually launching a pretty interesting course, a couple of courses later on. So yeah, that is in the pipeline. Can psychology student do UX design? 100%, Tanya. It should not stop you at all. In fact, because आपने psychology पढ़ी है, you will be much much better at it. Difference between visual and UI designer? Oh, sure, yeah. I would still recommend for anyone who is using this portal to ask me questions, right? I feel like it's very important that you should sort of first search on Google, Medium, and all of these other platforms, and then sort of ask me questions जो आपको internet पे मिल ही नहीं रहे हैं, right? So I think that is very very important. Uh, let's see. Hey Ansh, when do you think we need to move from freelance to working in startups and companies? I think it's also about knowing what you really want. तो फ्रीलांस में क्या होता है, a lot of people are making a lot of money, तो उनको होता है कि why should we even join a startup, because हम फ्रीलांस में ऑलरेडी इतना कमा रहे हैं. So if you start becoming more confident in what you want to do, and if you find good people to work with, then you can obviously join a company. क्योंकि जब आप फ्रीलांस में काम कर रहे होते हो, you have independence, आपको किसी को कुछ रिपोर्ट नहीं करना है, you don't have to sort of report to anyone, right? Because you are your own boss. So it's very important कि you start working on a startup only if, one, you believe in the idea, or second, if you believe in the people who will be working with you. Those are the only 2 reasons. 3 quick tips for someone starting their career in UX. So Naman, I feel like you need to take care of yourself first. Make sure that you're reading, make sure you're taking care of your body, your mind, then your ability to solve problems, your ability to make systems, your ability to design, from a visual perspective, design good looking interfaces. I've covered this in depth in my course, so I would strongly recommend you folks to check out the link जो मैंने अभी आपको मैंने एक course बताया है.
right? You can very easily start learning UX for free. आपको बस link खोलनी है and you can very easily start learning, right? Can I explore more than one field at a time? Of course, but you know आप पे टाइम ही नहीं बचेगा. मैंने जब मैं कॉलेज में था, I was exploring multiple things in one go. तो मैं 3-4 अलग अलग चीजों को एक साथ pursue कर रहा था. You can very easily do all of that. When you make a proper video on project management and presentation, soon, but not now. Why are you not developing your own idea or product? I'm sure you'll be having a great idea. So Ritvik, Zuddl Studio is our idea. The platform that I'm working on right now is Zuddl Studio, and ये जो मैं stream कर रहा हूँ, it is from Zuddl Studio. तो मेरे ideas लगे हुए हैं Zuddl Studio में, हमारे team के ideas लगे हुए हैं. So I am already working on what I wanted to. Thank you, Naman. Thank you. Hey Ansh, I got many clients for UI UX project, but can't able to land on any companies to kickstart. That means you still have to have proper case studies. You need to have a proof of work in your portfolio, and you need to put yourself on the internet and start getting connected to people on LinkedIn. If you're connected to the right people on LinkedIn, eventually they will notice you, और आपको कोई ना कोई opportunity मिलेगी ही मिलेगी. How do you get content to be written in a case study? तो इसी चीज पे मैंने एक वीडियो बनाया अभी तेज, मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे हाउ टू राइट अ केस स्टडी में मैंने एक रिसोर्स शेयर करा है जो आपको लिटरली बुलेट पॉइंट्स में एक ब्लूप्रिंट दे देता है टू टीच यू हाउ टू राइट अ यूएक्स केस स्टडी. तो अगर आपने वो रिसोर्स फॉलो कर लिया, यू विल वेरी वेरी इजीली गेट स्टार्टेड. Adobe Aero, are we going to design everything in AR? Not sure. मैंने Aero को explore नहीं करा है, but of course AR is the future. अभी 2-3 साल है for it to like become a mainstream. But if you get time, you should 100% start working towards AR. I'm struggling with research part. Not many people are filling out the survey forms. I'm approaching people, but not many are responding. Any tips of easing the research process? That happens. You then basically have to rely on online stats, yeah, online behavior, or you have to make certain assumptions, but don't let the survey stop you from building your solutions. अगर आपको लगता है कि लोग सर्वे नहीं कर रहे हैं, then put it in your case study कि मेरे लिए लोगों ने सर्वे नहीं करा. So this is what I'm assuming from my experiences, and जो भी मुझे थोड़ा सा सर्वे मिला है, I am making assumptions and I'm making estimations. What's your thoughts on buying a domain name for a portfolio? So Bilal, I recommend everyone to buy a domain for their name. चाहे वेबसाइट बनानी हो ना बनानी हो, इंटरनेट पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नाम का .com आपके पास है, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल प्लॉट खरीद लो, बाद में आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी हो कि आप कर लेना. क्षितिज, द फास्टेस्ट वे टू गेट इनटू प्रोडक्ट डिजाइन इज बाय यूजिंग दिस कोर्स राइट हियर. तो अगर आपने इस कोर्स को यूज कर लिया, इट इज फॉर एब्सोल्युटली फ्री. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट एंड इफेक्टिव वे टू गेट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्ट डिजाइन. Hi Ansh, please tell me how can I use Lottie animations as vector animations as we use an XD? UX Satin, I would recommend you to Google this question. You will find the answer on Google. Which is better in starting off your career, to be in product company or an agency? Product company for sure. I feel like product companies will teach you a lot. In fact, more than product companies, try to enter a good startup which has a scalable idea that would teach you even more. How important it is to be really interactive and like be active on LinkedIn for landing a job? A lot. It is so important, Ayushi. It's literally about connecting to the right people so that when you put your work on LinkedIn, they start noticing you. क्योंकि अगर आप लोगों से connected नहीं होंगे, अगर आप दुनिया का बेस्ट काम भी डाल रहे हो, nobody will see it and it will never convert into an actual opportunity. हे अंश, तुम्हारी पर्सनालिटी बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलती जुलती है. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रीड दिस. ये आज का, इसको मेरा माने कि मैं इसको पिन कर दूं. बेस्ट क्वेश्चन एंड टेक्स्ट. Thank you, Techie Ovesh. How to know what salary to ask for first product design job if you are pivoting from a different field and a high pay? Parth, it's all about how good you are, and आपको मार्केट ही बता देगी कि आपका रेट क्या है. तो अगर फ्रीलांस में आपको बहुत इजीली 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो जॉब में आपको शायद 60,000 रुपए मिलेंगे, बिकॉज इट्स यूजुअली लेसर. जो फ्रीलांस में लोग काम करते थे यूजुअली हैव हायर अर्निंग्स. तो आपको मार्केट ही बता दे कि आपके रेट्स क्या है. ऑन एवरेज ट्विटर पे भी आपको बहुत सारे सर्वेस मिल जाएंगे, बट किसी भी सर्वे को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट आपको कितना पे करेगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर रियल विद योरसेल्फ. एंड मैंने जितना भी क्राइटेरियाज बताए हुए, जो मेरी व्हाट इज यूएक्स यूआई डिजाइन की वीडियो है, उसमें मैंने पूरा चेकलिस्ट दी है कि अगर आपको वेरिएंट्स आते हैं, स्टाइल्स लाइब्रेरीज मेंटेन करनी आती है, ऑटो लेआउट आता है, आपका विजुअल डिजाइन स्ट्रांग है, आपको हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग आती है, और आपके पोर्टफोलियो में 3 डिटेल्ड केस स्टडीज, आपको बहुत इजीली 65,000 to 75,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी. Do Indian startups have specific design systems job? Not on a very wide scale, Piyush, but they do.
इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव इट, बट अभी यूजुअली जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बजट बहुत कम होता है, तो वो एक डेडिकेटेड पर्सन को नहीं हायर करते फॉर द डिजाइन सिस्टम्स. व्हाट दे डू इज दे वांट टू ब्रिंग वन पर्सन ऑन बोर्ड जो उनका यूआई भी संभाले, यूएक्स भी संभाले और डिजाइन सिस्टम्स को भी संभाले. सो इट्स बेटर टू बी अ जनरलिस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एंड अप्लाइंग फॉर स्टार्टअप जॉब्स, क्योंकि अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाओगे देन यू हैव टू टारगेट रियली हाई कंपनीज वहां पे, देन दे वांट 5 to 6 years of experience, sort of maintaining design systems. um can you please do a separate short video on explaining and building community on LinkedIn? So आयुषी, मैं बताता हूँ मैंने LinkedIn पे क्या किया था. मैं मीडियम पे जाके आर्टिकल्स पढ़ता था. जो आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं उसके ऑथर से LinkedIn पे कनेक्ट करता था. जब मैं उनके साथ LinkedIn पे कनेक्ट करता था, आई वुड actually tell them what I liked about their article so that the message is authentic. Once they recognize that I am sincerely interested in design, they would accept my request, and that is all I did. And I would target at least 4 to 5 connections every single day. I think not 4 to 5, but I think 2 connections every day I would do it, because मैंने टारगेट बना लिया था कि मैं हर रोज 2 मीडियम आर्टिकल्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा. मोस्टली वो दोनों मीडियम आर्टिकल्स अच्छे होते थे, तो मैं उनके ऑथर्स के साथ कनेक्ट करता था. आज भी 2-3 साल बाद जब भी मैं लिंक्डइन पे कुछ काम डालता हूँ, आई नो दैट दे कैन नोटिस मी. सो इट्स नॉट जस्ट लिंक्डइन, आप इंस्टाग्राम पे भी काम डालो कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल नोटिसिंग यू. दिल्ली मीटअप का क्या सीन है? सो इट इज हैपनिंग. अभी मैं बस वेन्यू की ही कोशिश कर रहा हूँ. एक्चुअली क्या है, खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है एंड आई डोंट वांट टू sort of go into losses again, क्योंकि जब मैंने मुंबई मीटअप किया था तो मेरे को बहुत लॉस हो गया था because I have no sponsors. So if I find good sponsors, people who I align with, then तो it's okay. But yeah, I'm just figuring out how to handle the financials, and there's too much work going on, in my personal stuff as well. But yeah, सितंबर में ही होगा दिल्ली मीटअप, और बहुत मजा आएगा और बहुत हाई क्वालिटी और बहुत प्रीमियम होगा. मैं चाहे कम लोगों का इवेंट रखूं, बट इट्स गोना बी लाइक टॉप क्लास. तो चाहे 16-18 लोग ही हो, बट it has to be top class. Currently doing BCom and learning UX, also thinking of doing an MBA from tier 2 college. Will it help in my UX career, like for managerial position? ध्रुव, किसी भी टाइप की एजुकेशन तुम्हें काम आती है यार, बट मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड एट योर ओन स्किल. तो यूएक्स में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो ही आपको यूएक्स की अच्छी मैनेजमेंट जॉब मिलेगी. अगर आपका यूएक्स ही कमजोर हुआ तो आपको नहीं मिलेगी. How much time should I give to the 100 days UI challenge? Udit, try to spend at least 30 minutes every day for the next 100 days. 30 minutes every day for the next 100 days, your UI skills would just exponentially shoot up. एक मीटअप जयपुर में भी करवा दो. यस ऋत्विक, जयपुर में भी होगा. इनफैक्ट सारे शहरों में होगा. मैंने सारे शहरों में एक एक करके करना है. So it's going to be a lot of fun. So yes, we are going to hit 30 minutes very very soon. So I think अब हमारा लाइव सेशन खत्म होने वाला है. बट अगर आपको लाइव सेशन अच्छा लगा, फोक्स, आई एम ऑलवेज रिलाइंग ऑन यू टू गो टू इंस्टाग्राम एंड एक्चुअली शेयर कि अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम अच्छा लगा या नहीं लगा. बिकॉज अभी इस लाइव पे अराउंड 80-84 लोग हैं. लोग आते हैं, सीख के चले जाते हैं, एंड दे जस्ट डोंट रेकमेंड माय लाइव स्ट्रीम्स टू अदर पीपल. अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं करोगे तो मैं कैसे और लोगों से मिलूंगा, कैसे अपनी रीच बढ़ाऊंगा, राइट? सो आई वांट यू फोक्स टू हेल्प मी reach more people. I want you folks to help me get more people on this live stream next week. क्योंकि I want more people to know that these live streams exist. I want more people to know कि यहाँ पे भी ये resources available है. So I will be keeping a note of every person who goes on Instagram and tags me. So you have to tag me on anshmehra.work. And ये मत करना कि great live stream. Like just try to tell people कि आपने क्या सीखा, क्या समझा. And I would really appreciate that because I'm keeping a note of everyone who's helping me. So yes, thank you so much for joining, folks. अगर आप पे कोई भी question है, of course, you can always message me on Instagram. And thank you so much for joining. I had a good time. कल next week हम फिर से मिलेंगे Tuesday at 8 p.m. See you.